welcome to maths class, and today we'll do symmetry and patterns. Patterns in nature are visible regularities to form found in the natural world. These patterns recur in different contents and can sometimes be modeled mathematically. Natural patterns include symmetries, trees, spirals, windows, weaves, forms, cracks and stripes. So you can see different kind of pattern and symmetry in nature. The things around you can see, like आप लीफ में देख सकते हैं, आपके अराउंड में जो चीज़ें हैं, लाइक फ्लावर है, एनिमल्स है, या डिफरेंट चीज़ों में यू कैन सी द डिफरेंट पैटर्न्स एंड सिमेट्रीज. Here are some figures which shows symmetries. So in the above figure we can see different type of patterns in the nature, animal, birds, vegetables, etc. Next is symmetry of figures. Symmetry refer to the exact match in size, shape between two halves. Means एक हाफ दूसरे के exactly equal हो, size में, shape में. अगर हम एक हाफ को दूसरे के ऊपर रखें, it's totally overlap it. Parts of the side of something. Figure which are symmetrical about the line, that is called the symmetrical figure, and that line is called this line of symmetry. Look at the following figure. Here you can see the butterfly. This is the line of symmetry in heart shape. The arrow, you can see the line of symmetry. All above figure are symmetrical about the dotted line. Dotted line के around ये सारे figure symmetrical है because the one half is totally identical to the other half. Next is completing halves. Draw the other halves to make symmetrical shape. So other half will look like this. Clear? Next, evaluation time 9.1. Write yes or no for the symmetrical figure about the dotted line. So in the first figure you can see it's not symmetrical around the dotted line. Clear? Because एक हाफ दूसरे के exactly एक जैसा नहीं है, identical नहीं है. Next, draw the other halves to make the symmetrical shape. So other half will look like this. Clear? तो इस तरीके से आपको draw करना है. Next, draw the line of symmetry for the following figure. So we have to draw the line of symmetry because one rectangle उसके अंदर circle है. Clear? Next, more patterns. When shapes are repeated again and again, कोई shape बार बार repeat हो रहा है किसी pattern में, तो एक pattern form होता है. Look at the following patterns. Here you can see a circle, inside that there is a square. Then square, inside that is a circle. Then again circle, inside square. उसके अंदर क्या है? Square. Then square और उसके अंदर है circle. तो इस तरीके से एक pattern जो है repeat हो रहा है. You can see. Clear? अगर आप इसमें देखेंगे सर्कल, देन सर्कल के यहाँ पे लाइन, देन यहाँ पे, इस तरीके से एक पैटर्न है. इन ऑल दीज यू कैन सी अ पैटर्न इज फॉलोइंग. क्लियर? नेक्स्ट, इवोल्यूशन टाइम 9.2. कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न. सो हियर यू कैन सी अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर, इस तरीके से पैटर्न फॉलो होगा. क्लियर? सो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अकॉर्डिंगली विल डू. नेक्स्ट इज नंबर पैटर्न. यू कैन सी द पैटर्न्स इन नंबर ऑल्सो. जो नंबर्स हैं वो भी एक सीक्वेंस में रिपीट होते हैं. दैट मेक्स अ नंबर पैटर्न. लुक एट द फॉलोइंग number pattern: 10, 20, 30, 40. So every time we are adding 10 to the previous number to get the next number. 10 में 10 add किया 20, 20 में 10 add किया 30. So in this series, the next number is obtained by adding 10 to it. 1, 5, 9. So here we are adding 4 to the previous number to get the next number. 1 plus 4, 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 4, 13. Clear? So this is the number pattern. Next is evaluation time 9.3. Look at the pattern of following series and write the next 4 terms in each series: 90, 80, 70, 60. So every time we are subtracting 10 from the previous number to get the next number. 90 minus 10, 80. 80 minus 10, 70. 70 minus 10, 60. 60 minus 10, 50. 10 subtract करेंगे 40, 30, 20. Clear? So this is the pattern. Next is look back. Figure which are symmetrical about the line, that are called symmetrical figure, and that line is called the line of symmetry. Patterns are the sequence of the number or object that repeated themselves. So here you can see 1, 3, 5, 7, 9. 1 के बाद क्या आ रहा है? 3. So
1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5। तो इस तरीके से पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। 9 के बाद आ जाएगा 11, 13। सो इस तरीके से हमें जो है पैटर्न्स पहले ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली विल डू द क्वेश्चन। क्लियर? सो हियर वी एंड द चैप्टर। आई होप चैप्टर को समझ में आ गया। नाउ टू प्रैक्टिस इट।